Yes, so my dear students, we are now moving ahead with one more important and the last question from this chapter, which is difficulties in calculating national income. Students, ये question जैसे methods important है, वैसे this is also one of the important question which can be asked for 8 marks. In this difficulties, we have two types of difficulties where we talk about the theoretical difficulties and the practical difficulties. If any of the one is asked, it would be for 4 marks. If both are asked, then it would be for 8 marks. So here when we talk about transfer payment, students, transfer payment जैसे हमने previous question में पढ़ा, that it the one of the example, if we talk about pension, it is given to the retired person. Unemployment allowance, when we talk about unemployment allowance is given to the unemployed person. But मोदी जी की सरकार आने के बाद ये बेरोजगारी का जो ये अलाउंसेस है स्टूडेंट्स, ये बंद हो चुका है, बिकॉज घर बैठे कौन ही पैसा देगा, गवर्नमेंट के पास एक्स्ट्रा पैसे थोड़ी ना ये पे करने के लिए. मुझे बताइए क्या पेंशन, क्या अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, क्या स्कॉलरशिप, क्या चैरिटीज वगैरह जो होते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट ट्रांसफर पेमेंट्स, जस्ट वन अकाउंट डेबिट टू अनदर अकाउंट क्रेडिट, इट इज नॉट प्रोड्यूसिंग एनीथिंग, इट इज नॉट करंट ईयर प्रोडक्शन स्टूडेंट्स, एंड देयरफॉर इट इज नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम. वी स्टडीड दैट इन द प्रिकॉशंस एज वेल. लेकिन मुझे बताइए ये एक डिफिकल्टी क्यों है स्टूडेंट्स, बिकॉज एक डेबिट एक अकाउंट क्रेडिट, ये ट्रांजैक्शन तो जरूर हो रहा है, लेकिन हम इसे देश के इनकम में जोड़ नहीं रहे. तो ये प्रॉब्लम है ना स्टूडेंट्स, that the money is getting circulated. The whole question emphasizes on that. The money is getting circulated, but we are not considering the same in the national income, and therefore it is a part of the difficulty. Which difficulty, students? Theoretical difficulty, right? Chalo, moving ahead with the next difficulty, which is illegal income. You can see the pictures. I hope ये point तो आप लोग को मेरे से ज़्यादा समझ में आता होगा. Betting, gambling, drug smuggling, सुपारी लेना देना, murder and all those illegal incomes. Income जरूर generate होती है, लेकिन of course ये बैंक अकाउंट में होती नहीं है, तो इसका कोई transaction होता नहीं है, क्योंकि ये cash में deal होता है. तो of course it is not added in the national income. Again students, money is getting circulated in the market, but it does not have any accountability, and therefore it is a difficulty. Then we have the next point, which is a unpaid service. We discussed in the precautions. मम्मी काम करते हैं, बहुत काम करते हैं, बहुत काम करते हैं, but she is not charging anything for the services that she do for you, right students? Therefore all the services of housewives, mothers, are out of love, affection, care, mercy, sympathy, charity, right? But it is not added in the national income. But students, अगर same चीज maid करेगी, क्या उसको आपसे कोई प्यार है? क्या वो चैरिटी कर रही है? क्या वो मर्सी दिखा रही है? क्या वो सिंपैथी दे रही है तुम पे? नहीं. She is doing for something that she needs to get in return, which is an income, and therefore she is doing it. तो उन्हें हमें पे करना पड़ेगा, लेकिन हमारी मम्मी जो हमारे लिए कर रही है, that is priceless. So all the unpaid services again are ignored from the national income because it do not have any monetary value. They are priceless. चलो मम्मी को थैंक यू बोल के आइए. Moving ahead with the next point, then we have the production for self consumption. So there are so many businesses, right students, जो business production करते हैं, लेकिन अपने ही business में, जैसे आप accounts में लिखते हो drawings, of course you jot it down in your books of accounts because आपने आपके business से वो withdraw किया हुआ है. वही अगर मैं गुड्स की बात करूंगी, सो कहने से सेल्फ कंजम्पशन, अगर फार्मर कुछ प्रोड्यूस कर रहा है, वो उसके घर पे कुछ लेकर जा रहा है उसके खुद के सेल्फ कंजम्पशन के लिए, सो इट इज नॉट एक्चुअली गेटिंग एंटर्ड इनटू द मार्केट. वो वहीं से फार्म से मार्केट में बेचने के लिए डायरेक्ट फार्म से उसके घर लेकर गया है अपने खुद के सेल्फ कंजम्पशन के लिए, एंड देयरफॉर इट इज नॉट इंक्लूडेड अगेन इन द नेशनल इनकम बिकॉज एक्चुअली इट हैज नॉट एंटर्ड इनटू द मार्केट. लेकिन अगर वो खुद का बिजनेस नहीं होता, वो कहीं बाहर से खरीदता, तो ऑफकोर्स वो देश की इनकम में ऐड होता था. बट हियर he himself is producing it and the product is not getting entered into the market, and therefore this self consumption is also a difficulty. Come on, moving ahead with the next point, which is very important again. Income of foreign firms, students, very simple. For example, if there is a company, an antivirus company, which is German based company, who had given sponsorship in IPL as well. कहाँ की कंपनी है? जर्मनी. ब्रांच कहाँ लाया? इंडिया में. इंडिया में इनकम होगा तो आपको क्या लगता है ये इंडिया की इनकम में ऐड होगा? नहीं स्टूडेंट्स, इट गेट्स क्रेडिटेड टू द पेरेंट कंसर्न. ऐसा क्यों हुआ मैम? फिर इंडिया ने काय को उसको लाया? अरे हमें तो सबसे बड़ा बेनिफिट हुआ है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ. So the income which is generated, it is always credited to the parent concerned, students, always credited to the parent
कंसर्न। देयरफॉर अगर इंडिया की भी कोई कंपनी अगर बाहर जाती है, कुछ इनकम जनरेट करती है, इट गेट्स क्रेडिटेड टू द पेरेंट कंसर्न। ऑफ कोर्स वहां पे क्या बेनिफिट सबसे बड़ा हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। सो इनकम ऑफ फॉरेन फर्म्स इज अगेन अ डिफिकल्टी बिकॉज ब्रांच कहीं और है, पेरेंट फर्म कहीं और है, और इनकम इज गेटिंग क्रेडिटेड टू द पेरेंट concern. Come on, moving ahead with the next difficulty. Then we have valuation of government services. There are so many government services which are actually not calculated at money value. If a government is providing a garden, they have provided a garden for all the children to play. Tell me, is there any value that we can calculate? It's a free service which is provided, right? There's no entry fee to it. सो यहाँ पे गुड्स हुआ, वहां पे सर्विसेज रेंडर हो रही है, वहां पे हम सर्विस को रेंडर कर रहे हैं, लेकिन क्या उसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू है जो देश की इनकम में ऐड हो सकती है? ऑफ कोर्स नहीं. सो कैन आई से द वैल्यूएशन ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज which cannot be expressed into the money value is not accounted in the national income. Then the next that we have the very dynamic point which is changing price level. जब देश की इनकम कैलकुलेट करी थी तब ये कैमरा का प्राइस था 1,00,000 रुपया, लेकिन जब थोड़े ही दिन बीत गए तो प्रोडक्ट का प्राइस हो गया 1,20,000 रुपया. अब साल खत्म नहीं हुआ है, उसके पहले ही प्रोडक्ट का प्राइस 1,20,000 हो गया. कैन आई से हाउ डू वी कॉम्पेंसेट दैट इंक्रीजिंग प्राइस, हाउ डू वी कॉम्पेंसेट दैट इन द नेशनल इनकम अगर प्राइस कम हुआ है? ये एक बहुत ही डायनामिक चेंज है. ये जो प्राइस लेवल के चेंज होते हैं बहुत कांस्टेंट है, इसे हम रोक नहीं सकते. देयरफॉर नेशनल इनकम जब कैलकुलेशन करती है सीएसओ, द सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, उन्हें ये डिफिकल्टी होती है that the changing price levels are changing very rapidly and therefore it is becoming a difficulty for them. I hope that's clear. So here we have completed till the theoretical difficulties. Now moving ahead with the next part of the question, which is a practical difficulties. In the practical difficulties, yes, we have the very first, which is a problem of double counting, students. So double counting, चलो अभी आप मुझे बताएंगे. We have repeated it multiple times, students. रॉ मटेरियल्स लेने का नहीं है, ओनली फाइनल गुड्स. सो डबल काउंटिंग को अवॉइड करने के लिए वी आर कंसीडरिंग ओनली फाइनल गुड्स. रिपीट, ये इजी है ना, रिपीट पॉइंट है ना. चल आगे बढ़ते हैं. चलो नेक्स्ट डिफिकल्टी, existence of non-monetized sector, students. So when we talk about the non-monetized sector, there are some sectors which are not expressed in the money value. तो हम देश की इनकम में कैसे ऐड करें? आपको पता है एक टाइम पे था बार्टर सिस्टम, कॉमन मेशर, स्टोरेज प्रॉब्लम, बहुत सारे प्रॉब्लम थे यार. बार्टर सिस्टम में हम कैसे मैनेज करेंगे? कोई मॉनेटरी वैल्यू ही नहीं है. सो बार्टर सिस्टम वैसे आज है नहीं, बट कहने से जब था तब डिफिकल्टी थी नेशनल इनकम कैलकुलेशन के लिए. दिस डिफिकल्टी इज नॉट फेस्ड एक्चुअली टुडे बिकॉज द सेक्टर्स, द प्रोडक्ट्स, द वेरिएबल्स हैव बीन एक्सप्रेस्ड इन मनी वैल्यू ऑल ओवर अगेन. So the value of non-monetized sector is not a problem today, but it was a problem, right? And therefore that is also one of the difficulty that the national income that the CSO faces. Then we have inadequate and sometimes unreliable data. As you can see, all the sectors over here, are they literate enough to maintain their books of accounts? Are they literate enough to file their income tax? Of course no, students. उनके पास काफी रिलायबल डेटा भरोसा करने जैसा नहीं होता है. बहुत बार रैंडमली कुछ इनकम बता देते हैं, डर लगता है हमें टैक्स भरने को आ जाएगा तो. सो इनएडिक्वेट डेटा, अनरिलायबल डेटा के कारण भी तो नेशनल इनकम कभी अंडर एस्टिमेटेड दिख सकती है, right? And this is also related to one of the point where the people are illiterate, and if they are illiterate, they do not know. If we talk about some informal sector, farming sector, animal husbandry, fishery, they're not literate enough to maintain their books of accounts. They are not going to appoint any CA for that, right, students? And therefore that is one of the difficulty again which is faced in the national income. So depreciation, we studied that to calculate the net value. हम depreciation को deduct करते हैं students, लेकिन आपको पता होगा depreciation के different methods होते हैं, straight line method, fixed method, ऐसे बहुत सारे methods होते हैं. हर एक company अगर अलग अलग method follow करेगी तो जो national income में हम formula में लिख रहे थे C plus I plus G plus X minus M plus R minus P minus depre, तो ये minus depre देश को कौन सा method use करना है? Average लेना है क्या? गलत हो जाएगा ना यार, वेग आंसर मिलेगा. देयरफॉर डेप्रिसिएशन माइनस तो जरूर करना है, ये तो बहुत ही क्लियर है. बट द प्रॉब्लम इज, द डिफिकल्टी इज, हाउ डू वी कैलकुलेट इट? बाय व्हिच मेथड डू वी कैलकुलेट इट? बिकॉज द कंपनीज आर फॉलोइंग डिफरेंट मेथड्स टू इट. आई होप इट्स क्लियर, राइट स्टूडेंट्स? कम ऑन. देन
Moving ahead with the capital gains or losses. So here when we talk about capital gains, so for example हम बोलते हैं शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के बाद कुछ लोग करोड़पति बन जाते हैं, कुछ रोडपति बन जाते हैं. सो यहाँ पे अचानक से बहुत सारा कैपिटल गेन्स हो जाता है, बहुत सारा कैपिटल लॉसेस हो जाता है. सो द कंपनी इज हैविंग द प्रोडक्शन सिंस मेनी इयर्स अब्रॉड, द कंपनी इज एस्टैब्लिश्ड सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम. तो उनको जो अभी कैपिटल गेन्स और लॉसेस होते हैं, इट इज नॉट कंपल्सरी दैट इट वुड बी अ रिसेंट करंट ईयर प्रोडक्शन जिसपे उनको ये लॉसेस और गेन्स हो रहे हैं, राइट. एंड देयरफॉर अगेन दैट वुड बी अ डिफिकल्टी. सो कैपिटल गेन्स, अचानक से बहुत प्रॉफिट हो गया मेरे शेयर्स पे, अचानक से बहुत लॉसेस हो गया, तो हम इसे देश की इनकम में कहीं ना कहीं एक्यूमुलेट कर पाते नहीं. एंड देयरफॉर दैट इज अ difficulty that the CSO will face. Illiteracy, as we discussed, ignorance. Again, you can see unskilled and the semi-skilled people, they are not going to appoint. Then we have inadequate data. They are illiterate enough कि they do not have their books of accounts and therefore if they do not know their actual income, तो वो लोग देश की इनकम में बताएंगे क्या हम कितना कमा रहे हैं. अरे हमें तो पता ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है तो हम देश की इनकम में क्या ऐड करेंगे. therefore that's a problem. So you can see it over here, they all are semi-skilled or the unskilled people. Majorly we talk about the unskilled people, right? Come on, then we have the difficulties in the classification of the working age category, the working population. So you all belong to the working age category students. आप सब 15 to 59 जो हमारे देश की working age category होते हैं उसमें belong जरूर करते हो. But क्या आप काम करना चाहते हो? आप काम करना चाहते हो स्टूडेंट्स? ऑफ कोर्स नहीं. क्यों? अरे गवर्नमेंट ने हमें बोला है हम तो 100% हमारे पढ़ाई को दे रहे हो स्टूडेंट्स. 100% रियली? यू नो द आंसर बेटर, राइट स्टूडेंट्स. मतलब आप वर्किंग एज कैटेगरी को बिलोंग कर रहे हो स्टूडेंट्स, बट कैन आई से यू आर एक्चुअली नॉट वर्किंग. इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू बाइफरकेट द वर्किंग एज कैटेगरी. 0 to 14 तो वैसे भी चिल्लर पार्टी है, 60 एंड अबव तो वैसे भी बूढ़े लोग हैं. तो हमें डिपेंड किस पे रहना है? वी आर एंगेज ऑन द वर्किंग age category. Even when we talk about the agricultural season, it's a few months seasonal unemployed, they're unemployed for the rest of the year. So again that is working population. Then we have the last point which is the valuation of inventories. मुझे बताइए जो परचेज किया है, ये सेल किया है, ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक है, हमारे इन्वेंट्रीज में पड़ा हुआ है, तो इन्वेंट्रीज की भी तो कुछ वैल्यू होती है ना. भले आज मेरा वो बिका नहीं है लेकिन मेरे स्टॉक में तो पड़ा है, उसकी एक वैल्यू तो है. सो ऑफ कोर्स इन्वेंट्रीज की अगर वैल्यूएशन करेंगे तो इट नीड्स टू हैव अ वेरी केयरफुल असेसमेंट बिकॉज इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस ईयर सेल. बट कैन आई से आज मेरे 31 मार्च को मेरे स्टॉक में है लेकिन नेक्स्ट ईयर तो बिकेगा ना. प्रोडक्शन इस साल का हुआ, सेल नेक्स्ट ईयर हो रहा है. We have to do a careful assessment. Therefore again that is a difficulty, valuation of trees.